Yeah. So guys, we have with us Arkam Khan. He's a person who has scored very, very, very well. Arkam, tell them your percentile. First of all, thank you, Jigar, for the appreciation as well as inviting me to this particular platform. So actually, hi, I'm Mohammad Arkam, and I secured 99.98 percentile in MBA CT 21. So guys, And I'm sorry. please. So Yeah, that please, is Jigar. like almost confirmed JBIMS admission. So today's call is basically regarding how Arkam did it. So this entire series of the videos that I'm going to post with different toppers is going to be about what they did differently, because obviously everybody prepares differently for the exam. So किसने क्या अलग किया, किसके लिए क्या काम किया, you can relate to the person, you use his strategy or her strategy. So that is what this entire series is going to be about. So we're starting off with Arkam. He was the first person who got ready, and now I'll completely pass over the stage to him, and I'll just keep asking him questions. तुम लोग देखते रहो कि क्या क्या तुम्हें अपने जैसा लग रहा है, and you can follow what he did. Arkam, please just give us a short introduction. Yeah. So actually, I'm an engineer, a computer engineer, and I graduated from Jamia Millia Islamia, Delhi. So I graduated in 21 itself. So I actually had a short window to prepare for CT, but I also prepared for CAT 20. So I had main aim was to get into a top B school. So I was prepping for both CAT as well as CT. And once CAT was done, I started preparing for CT. But as we all know that it got delayed massively. So yeah, so I took up a job and I started, balancing things. So I was working as well as I was preparing for CT. So actually, I'm still working as a business analyst for EXL service. And I gave CT while working, and yeah, that's it. So that is all about what you had studied. So I didn't know that you were from Delhi. Apart from that, ये बात मुझे नहीं पता थी. Actually, I graduated from Delhi. I am from Mumbai, but I graduated from Delhi. But that too from the university that has been in the news for a long time now. Yeah, that's some controversy. Yeah, that there is some conjecture there. Let's not get there. Yeah. So any effect that you think? So obviously, normally CAT में जो prepare करते हैं उनको CET easy पड़ता है. Did you feel that was the case with you also? Or okay, let's frame this question better. तुम्हारा CAT का preparation और CET का preparation अलग था, same था, और अलग था तो कैसे अलग था? Largely मैं बोल सकता हूँ कि same ही था. But there are some types of questions I'd say, especially in LR, that are only specific to CET, right? Suppose if I had to pick one, I'd say input output. That is something very specific to CET. And similarly, the series question, I struggled a lot with series, to be really honest, the number series. So that is something which is very specific. So if someone is preparing for CAT, I'll say थोड़ा minor tweaks चाहिए, थोड़े से changes चाहिए अपनी strategy में. But yeah, largely they are similar because both are competitive exams. It's true that CET is speed based and CAT is more higher LOD, but still I believe that if someone is preparing for CAT, he has a really good shot at CET. CAT में कितना आया था? If you don't mind me asking. CAT 20 में मेरा था 97.87%. That is a really good percentile. Did you get any calls? Yeah, I had calls from the newer IMs, but मतलब target तो elite B school में जाना था, कोई elite B school में जाना है. So I did give the interview. I converted a few of the new IMs, but I was not satisfied. Obviously. it makes a difference. Top B school में जाना है तो CAT 21 try करते हैं, नहीं तो CET 21 try करते हैं. Did you take the CAT 21 though? No. Results आने के बाद हो गया तो फिर आराम किया, chill किया. फीस भरा था CAT का? हाँ भरा था.
बट वो थोड़े पैसे जाने देना चलेगा, वो हाँ जो दिमाग को चलेगा. शांति मिली है ना, उसके लिए 1800 रुपये जाने दिया, 18 से 2000. So yeah, that's amazing. So you tell me now, what were your weak sections when you were preparing? So जब CET के लिए purely were you preparing, तब what were your weaker sections and how did you overcome that weakness? एक्चुअली पहले तो कैट के लिए प्रेपरेशन कर रहा था, तो मतलब जो जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो वो तो कवर हो गए थे सीटी के सारे, तो उसमें इतना इश्यूज नहीं आ रहा था. फिर जब कैट के बाद सीटी स्पेसिफिक प्रेपरेशन चालू किया, when I started preparing for this CT specific like input output series, abstract reasoning, so initially I struggled a lot, especially with input output and this number series. There was one specific question, another from blood relationships, where we have that plus wala is father of this, minus wala is mother of this. I mean, that was so tough for me. I mean, I can't describe it. So जब भी आता था, मैं मॉक्स जब देता था उसको छोड़ ही देता था, और तो खाली टाइम खाएगा, कुछ होएगा नहीं. तो अगर ओवरकम करने की बात करेंगे तो फिर मतलब व्हाट आई डिड वाज कि मॉक्स दिया, एनालाइज किया, एंड आई डिडंट गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स. मतलब people say that you need to give 20 or 30 mocks to get into JB. I didn't do that. What I did was I gave only 9 mocks, if I remember. So 8 or 9 mocks. I don't remember the exact number, but it was 8 or 9 mocks. But the analysis was very, very thorough. I mean, I had only two things that I used to do in analysis. The first was कि जो question नहीं हो रहा है उसको और practice करो, और जो क्वेश्चन हो रहा है बट इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, उसका टाइम कम करो, नो मैटर हाउ. Oh my God, I feel like I'm listening to myself, जो मैं सारे students को 25 बार बोलता रहता हूँ. I get so many students and the students who didn't get good percentage, they tell me, sir मैंने 40 marks दिए. I'm like, it's not about how many marks you take. Like I suggest that maximum अगर तुम जनवरी से चालू कर रहे हो और मार्च में एग्जाम है, तो 2.5 महीने में तुमने 20-25 एग्जाम्स दे दी, बहुत है मॉक टेस्ट. इफ यू आर एनालाइजिंग देम प्रॉपर्ली, प्रेफरेबली 10 से 15 दो एंड एनालाइज देम परफेक्टली. अगर मॉक 2.5 घंटे का है तो एटलीस्ट 5-6 घंटा तुम्हारा उसका एनालिसिस चलना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट क्या सही क्या गलत है, इट्स अबाउट जो सही है उसको और जल्दी कैसे करूं, एंड जो गलत है वो गलत क्यों हुआ. सो इट इज अ लेयर्ड प्रोसेस. इसके लिए एनालिसिस को टाइम लगता है. एंड आई जस्ट एक्चुअली analysis is so boring and so tedious, but अगर वो कर लिए तो फिर then you'll see your score improve, right? Definitely. So did you maintain an Excel sheet or something जहाँ पे तुम सारा लिखते थे? No, I was mostly on pen and paper. So अच्छा, pen and paper kind of a person. I am a full Excel person. तो मैंने ऐसे Excel पे पूरा जब बनाया हुआ था टेबल कि ये इसमें मुझे इतना आया, इसमें इतना आया, इसमें इतना आया. बाद में मैंने नीचे ग्राफ बनाया था कि मेरे मार्क्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं. एवरीथिंग आई हैड मेड दैट वे. तो आई लव एक्सेल, तो उसमें मुझे मजा आता है. बट द थिंग इज, एनालिसिस गिव्स यू अ डायरेक्शन वेयर यू आर गोइंग. वो डायरेक्शन के बिना ना बहुत अधूरा होता है preparation. But yeah, that's really amazing, and thank you so much for saying that. I was just enjoying when you said that. I mean, मतलब मेरा तो यही बोलना है कि मतलब analysis is the key to JB. Definitely. If you don't analyze and you give 30 marks or 40 marks, your score won't improve. The key is to improve your score, right? Perfect. Thank you so much for saying that. So yeah, now another thing, since you were working, how did you manage your work along with studying? Like I understand कि तूने जून जुलाई में job join किया and the CET came up just like थोड़े टाइम के बाद ही CET आ गया, 2-3 महीने में. But before that, if you say that, so how did you manage? Let's keep it that way only. How did you manage? Actually, मतलब I didn't put a lot of hours. I usually put I think 2.5 to 3 hours. That was my maximum. Not more than 3 hours. And I know I'm a morning guy, so मतलब सुबह जल्दी उठ के पढ़ता हूँ मैं. I'm not the late night guy. So and thankfully my job begins from 12 in the afternoon. So 12 to 9 is the time. So I get a lot. I used to get a lot of time in the morning. So I utilize that time. And अगर आज mock दिया तो next 2 days analysis. Amazing. Yeah, that was the key. That was मतलब my thing, because I believe that can you describe your analysis a little more?
मतलब after you were saying, after you are done what you are saying, can you describe your analysis process a little more for the students to understand? या सो सबसे पहले मतलब मॉक से पहले एक बार हाफ एन आवर में मतलब ये करता कि क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है मॉक में, इस चीज को एनालाइज करता क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, क्योंकि आई मीन बिफोर सीईटी वी यूज्ड टू क्रिएट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज की पहले ये सेक्शन, सीईटी आने के बाद तो सब वो हो गया, सीन हो गया उसका राइट कि सीईटी मतलब पूरा ही अलग था, ठीक है। तो हाफ एन आवर आई यूज्ड टू मतलब मेक अ स्ट्रेटेजी की, एंड आई यूज्ड टू ट्राई डिफरेंट स्ट्रेटेजीज की विच वर्क्स फॉर मी बेस्ट, राइट। तो पहले तो स्ट्रेटेजी सारी मतलब अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था अकेले में कि हाँ ये स्ट्रेटेजी ऐसा करना है। आफ्टर दैट आई यूज्ड टू गिव द मॉक, मॉक हो गया तो बंद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे स्कोर देखने का है, स्कोर नेक्स्ट डे देखता था, फिर सेक्शन वाइज मतलब जाता था, और सबसे पहले उस पे आता था कि लास्ट मॉक में जिसमें गलत किया है उस टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड करता था, और मतलब ये नोटिस करता था कि इस बार सही किया कि इस बार भी मतलब इट्स द सेम, और इफ इट्स द सेम इस बार भी अगर गलत हो गया तो उसको डबल स्टार मार्क करता था, भाई इसको तो करना ही करना है, या तो ये करता था। उसके बाद फिर नेक्स्ट आई यूज्ड टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड जो सही किया है उसका टाइम देखता था कि कितना टाइम ले रहा है। We also get, in all a lot of the mocks that the institutes provide, we also get the average time that students take, right? So उससे तो कम रहना ही चाहिए. If you are you take a lot of time, even higher than the average, then I don't think it's of much use. तो टाइम को रिड्यूस करने के लिए मतलब उसी टाइप के कई क्वेश्चन सेलेक्ट करता था, एंड आई यूज्ड टू ट्राई डिफरेंट, कि कॉन्ट्स में इट्स नॉट ओनली वन स्पेसिफिक मेथड, इट्स नॉट एक ही मेथड से करना है, यू कैन यूज अ नंबर ऑफ मेथड्स। तो ट्राई करता था कि टाइम को, मेन वाज टू रिड्यूस द टाइम बिकॉज सीईटी इज स्पीड बेस्ड, राइट? या सो these two are the key for me getting into JB. That is what I believe. So this is something taking from what Arkham said. So this is something that I've heard from a lot of people who scored very well. हमारे टाइम पे भी जो सारे टॉपर्स थे तो सब बात करते रहते कि तूने क्या गलत किया, तूने क्या गलत किया। Almost everyone, see, understand, especially quants जैसे टॉपिक में, where you should reach a point where तुम सम देखो, it should not be कि मैं ये सम कैसे करूँ, it should be at a point where कि अरे ये सम करने के 3 तरीके, मैं कौन सा वाला यूज करूँ। If you reach that point, then you can rest assured that हाँ चलो मेरा प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे जा रहा है। That is a kind of goal that you should keep for yourself in mind. मतलब ऐसा achievable goal. It's not very difficult also. Is that right, Arkham? Would you agree with that? Yeah, absolutely. That's absolutely correct. Yeah. So, did you वो सुबह जब तू पढ़ता था, did you have any particular study schedule or something कि मैं हफ्ते का तू बना के रखता था या फिर रोज का रखता था, और was it just जो मन हुआ वो दिन वो करता था पर एकदम तोड़ के करता था? How was your thing? जो मतलब एक्चुअली जो वीक पॉइंट्स से जो मार्क्स में मिला उसी को मतलब फुल डेडिकेटेडली या तो टाइम रिड्यूस करना है या तो एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, यही दोनों मतलब मेन फोकस था अपना। तो इसी दोनों के अकॉर्डिंग जो लास्ट मॉक था, आई यूज्ड टू गिव 1 मॉक अ वीक, राइट? सो तो बाकी थ्रू आउट द वीक उसी मॉक के मतलब जो इम्प्रूवमेंट्स करने उसी पे वर्क करता था। Okay. And so you must have obviously seen a lot of YouTube videos also during a prep. There are a lot of videos which say the do's कि अरे ये करो ये करो ये करो। I really want you to tell me what were the don'ts that you followed कि ये चीजें मत करो। What are the don'ts that you will tell the students? Don't do these things. ऐसा at least 3 या 4 चीजें मुझे बोल कि ये चीजें मत करो। Yeah, I mean there is one a very common misunderstanding that people have while preparing for CT. They set a target score कि 140 लाना है, 150 लाना है, and that is something I feel that is very inappropriate because CTA cutoff का कोई कभी कुछ नहीं बोल सकता है. It could be 125 for JB, it could be 160, 170 for JB, right? This time it fell, right? This time it actually fell. I'm not sure. A final list आएगी, then we can make something about the cutoff. But yeah, तो ये कि मेरे को 140 ही लाना है तभी मैं JB में आऊँगा, तो I don't think that is something appropriate. You should give your best. और आपको मॉक्स में तो बाकी आपका परसेंटाइल वगैरह मिल ही जाएगा, तो you will get to know where you stand, right?
Which mocks did you take, if you don't mind me asking? Actually, I purchased तो मैंने 2 किए थे, IMS और टाइम, एंड देयर वाज अनदर इंस्टीट्यूट, उसने अपना वो कराया था स्कॉलरशिप टेस्ट. तो दी स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या था कि टॉप 3 स्टूडेंट्स को वो Amazon के वाउचर्स देंगे 10,000 के समथिंग. तो मैं बोला लाओ चलो Amazon का वाउचर मिल रहा है, ले लेते हैं. I didn't give any test of I didn't give any of the mocks, but ठीक है ले लेते हैं, वाउचर मिल रहा है, क्या दिक्कत है. Okay, great. So we went out to the big two, like IMS and time, इन दोनों की mocks हाँ, में purchase. टाइम का भी मैंने मतलब एक ही मॉक दिया था, मोस्टली इट वाज IMS. अच्छा, एंड कितने परसेंटाइल आ लेते जनरली तुम्हें? परसेंटाइल एंड स्कोर? Score actually, in my first mock I think it was around 120, somewhere between 120 to 125, right? So but then I realized कि मैंने तो मतलब when I started analyzing, I realized कि मैंने तो यार सारे अटेम्प्ट करिए 200 के 200, सारे तुक्के भी मार दिए. तो मतलब that is one mistake that people make while giving mocks. Please मतलब ऐसा करो कि मतलब please don't mark all the 200 questions, only mark your genuine attempts. And another thing that I'd suggest is last 3-4 minutes you leave it, you close the mock, because in the actual CT you'll need the last 3 or 4 minutes to mark your tukkas. Oh my god, I just can't believe that. I feel like I'm just talking to myself. Last year I have a video on YouTube, मतलब मेरा जब किसी ने इंटरव्यू लेता है, I literally was saying the same things कि तुक्के मत मार्क करो, लास्ट के 5 मिनट में पेपर छोड़ दो, just submit the paper, वहाँ पे बटन होता है. That is a very good thing. And you know where that helps, because you are in the state of mind continuously कि मेरा पेपर मेरे लिए 145 मिनट्स का ही है. You will almost always find that CET में थोड़ा टाइम तुम्हारे पास बच ही जाएगा. You will be less stressed towards the end because you know in your mind कि थोड़ा ज्यादा टाइम है अपने पास normal exams से, because your normal is 145 and the actual is 150. So that really helps. Okay, so that's 2 don'ts. Now tell me a third one. Let me ask you this. Did you watch all these analysis videos जो CET के बाद आते हैं वो? Yeah, definitely. मतलब analysis तो नहीं जैसे previous slot का analysis, which slot were you in? I was in the first slot of the third day, so it's slot 5. हाँ, तो तूने पहले के slots के analysis सारे videos देखे थे? हाँ, मतलब उसी से पता चला था कि भाई जम्बल्ड पेपर आ रहा है, कुछ सेक्शन वेक्शन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब फिर ओवरनाइट अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लिया मैंने. That you believe. You tell me उसमें से क्या भरोसा करना चाहिए, क्या भरोसा नहीं करना चाहिए. You tell me about that. सबसे पहले तो यार इस चीज पे मत भरोसा करना चाहिए कि पेपर टफ था या इजी था, बिकॉज दैट इज वेरी सब्जेक्टिव. किसी कैंडिडेट के लिए पेपर बहुत ज्यादा टफ हो सकता है और किसी के लिए बहुत इजी हो सकता है, राइट? या एंड थिंग्स टू बिलीव इज दैट कि पेपर जम्बल्ड आया, अगर पेपर पैटर्न इट्स नॉट गोना चेंज, राइट? सो उस पे तो बिलीव कर लो और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करो. मतलब मैंने भी सेम किया था, अपनी स्ट्रैटेजी ओवरनाइट चेंज किया एंड सक्सेस तो मिल ही गई. That's really nice. Obviously, a success मिला है यार. That is why we are here. So yeah, so yes, this is something that I really want people to listen. बहुत ध्यान से सोचो और समझो. जो कोई भी CET के बाद जो एनालिसिस वीडियोस आते हैं, वॉच इट ओनली सो दैट तुम्हें पता चले कि पेपर में क्या है क्या नहीं है. एंड डोंट, वो भी एकदम पत्थर की लकीर टाइप नहीं है दैट ऐसा ही होगा. यू विल जस्ट गेट एन आइडिया कि जैसे ये बार लोगों को पता चला दैट सेक्शनली उन्होंने डिफरेंट नहीं रखा है, उन्होंने एक ही सेक्शन में सब कुछ डाल दिया. दैट इज इट. अगर तुम देखने जाओगे और पेपर जो स्टूडेंट बोल रहा है वो स्टूडेंट ने बोला अरे पेपर बहुत ज्यादा टफ था, बहुत टफ था, मुझे तो कुछ आया ही नहीं, तुम लोग स्ट्रेस ले लोगे. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, अगर वो स्टूडेंट का प्रिपरेशन 50-60 परसेंटाइल वाला है एंड तुम लोग का प्रिपरेशन 99 परसेंटाइल वाला है, वो स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा 99 की जगह पे भी 95 आएगा. स्ट्रेस इज अ किलर ऑफ योर मार्क्स. डोंट लेट द स्ट्रेस गेट टू यू. सो दिस इज माय सजेशन फ्रॉम व्हाट Arkam said. So I really agree with him. Another thing about stress is that मतलब CET is something that मतलब आपको पेपर के टाइम काम भी रहना है and at the same time you will have to hurry as well because time is very less. If you take a lot of stress, your accuracy will dip. Surely it will dip. There's no second thing to it. Right? So Arkam, this is just one conversation that we had. ये recording चालू किया उसके पहले. You remember the age वाला conversation?
So yeah, yeah. Arkham is 23, and I just asked him, okay, you're working and everything. So we had this very nice conversation जहाँ पे many students they feel that 25-26 के बाद है ना CET देना and MBA करना becomes very tough because अरे यार मैं निकलूंगा तो 32 साल का होऊंगा. But understand this, समझो अगर मैं 30 साल का हूँ, मुझे अब पता चल रहा है that okay, मुझे मेरी लाइफ में ग्रोथ की जरूरत है, जो अगर मैंने 25 साल पे MBA किया होता तो मुझे काम आता था, तो वो ग्रोथ मेरा हो जाता था. Does that mean मैं 35 साल की उम्र में भी सेम सोचता रहूंगा, और मैं 30 साल पे MBA करूं, 32 साल पे निकलूं और बाद में मेरा ग्रोथ उस हिसाब से चालू होगा? So I understand that there is a lot of societal pressure, especially more than your family, your relatives, जो लोग तुम्हें आके बोलते हैं that अरे तू 25 साल का हो गया, अब कब तक तू पढ़ाई करेगा करेगी, अब कमाना चालू करो या फिर अब शादी का सोचो. See, that is all fine, but in the end you don't want to regret your life, or you don't want to regret a decision that you did not take. See, it's better to do something and regret it than not do something and regret it. The people who invest in stocks will relate to this. Chodo. So yeah, I suggest that does not matter what age you guys are at. It's fine अगर तुम 25-26 पे भी MBA करने जा रहे हो. We are going to have a video with one of our students who is doing who right now got JBIMS at the age of 30 years. So वहाँ भी हम देखेंगे. Don't worry about that. Apart from that, now Arkham, I have one question for you, very personal question. Why only JBIMS? Like, I assume that you wanted a top college only. Why only a top college? And what is your plan after JBIMS? Now that you are almost at JBIMS, no, JBIMS की दहलीज पे हो तुम. So now what is your goal after JBIMS? So as far as why JBIMS is concerned, I mean बहुत सारे लोग ये पूछते हैं why JBIMS. So I say why not, right? Why not? I mean there are a lot of factors. The biggest factor is I am from Mumbai, तो घर पे रह के हो जाएगा. That is something which is slightly personal, but yeah, that is an advantage for me. Apart from that, if I consider the location of JBIMS, मतलब एक बार मरीन ड्राइव गया था, तो ऐसे ही वहां से चले गया था JB चलते चलते, बोला था चलो देख के आते हैं, इतना नाम है देख के आते क्या है. So I mean the location, I was mind blown about the location. It's in the financial hub of the financial capital. So there, I think there's no B school in the country which can challenge JBIMS in terms of location. Right. HDFC का मेन ऑफिस अपने सामने ही है, like literally. हाँ देखा था. दो कदम बाहर लो तो HDFC के ऑफिस में पैर गिरता है, वैसा है. Like JBIMS में I just really wish till I am alive I get to see JBIMS का building totally renewed. Like you will agree to this क्योंकि तुमने बिल्डिंग देखा है. बिल्डिंग रिन्यू हो गया then तो I'm pretty sure यार मतलब और भी अच्छा हो जाएगा कैंपस. I think I read an article that they are building a new campus somewhere in Kalina, right, near to BKC. वो plans है, वो बाद में बात करेंगे. So and apart from that, what are your plans after MBA? Like कुछ सोचा है? Actually, I plan to, actually I'm working in analytics right now, right, and I'm actually a really really big fan of analytics. So after JBA, I plan to continue working in analytics because मतलब MBA करने के बाद ऐसा थोड़ी है कि टेक्निकल फील्ड से बाहर हो गए, ऐसा कुछ है. नो, मार्केटिंग एनालिटिक्स भी है, फाइनेंशियल एनालिटिक्स भी है. तो या दैट इज माय प्लान एज ऑफ नाउ. बट अब JB जाके देखते हैं, कुछ चेंज भी हो सकता है. So what I like about your plan is that you have a direction, but you aren't rigid on a decision. So that's something that's really nice. My personal suggestion, hold on to it. As a senior, this is my suggestion. Hold on to that. And I really hope that it works out very well for you. And apart from that, if there is any other point that you want to add personally for the students, then please go. I'm done from my side asking you everything. Please just. Yeah, there is one thing. A lot of people, मतलब start करते preparation, तो they are very determined to get into JBIMS, huh? But after a few days, they start thinking कि Sydenham is not that bad, or Wellington is not that bad. And no disrespect to these institutes, they are really good institutes. But there is this thing: if you want to get into JB, you'll need to have this attitude throughout कि JB ही जाना है throughout your preparation. The day Sydenham comes to your mind, you're out of the race. I mean, that is what I feel. It's a really great attitude to have. मेरा ऐसा ही हुआ था.
I don't know if you know or not, but I took the CET 4 times. And पिछली तीनों time है ना, I did not get a JBIMS जितना score. So I scored 99.674 4 and 3. 99.03, and then I scored a 99.99. All the 3 years, I did not even fill the cap round. I'm like, JB चाहिए वरना नहीं चाहिए. So I was working throughout alongside, and along with that, I was just like, चाहिए तो सिर्फ JB वरना नहीं. And I guess that is one thing that got me here. Obviously, you got in the first time. You have my congratulations, my blessings, everything. Really proud. Actually, this was not the first time. I gave CET when I was in the pre-final year of my graduation. You know, just to get an overview कि क्या रहता है भाई, कैसा है. So वो time पे कितना आया था? That time I prepared for 1 week and my score was 98.3 something. I don't remember exactly. You know, ये लाइन सुनने के बाद इतनी गालियां मिलने वाली है तुझे. एक हफ्ता पढ़ के 98.3 आ गया इसको. Actually, I was preparing for CAT, तो CET specific एक हफ्ता किया था. अच्छा वैसे. But yeah, apart from that, just Arqam, I'm actually more satisfied than I had thought that I will be with this interview. Absolutely loved talking to you. I did not feel like I'm talking to a student. I felt like I'm legitimately talking to a friend, and a friend that I really relate with, because everything that you said, I felt like, अरे यार, यही तो मैंने बोला था last year. Yeah, I'm really happy with this interview, and I just hope that you do your best. अभी admission जल्दी ही हो जाएगा, and I just hope that things turn out the best for you. Yeah, and hope I'll meet you in JB. I hope we get to go to JB. Okay, chalo. So guys, that's Arqam Khan, and I just hope that you really like the video.